everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is The Goose and Its Golden Eggs. Let's begin the chapter. Chapter 2, The Goose and Its Golden Eggs. Greed is a bad thing. Value talk. Greed is bad because it motivates you to do bad activities for your benefits. It can destroy our life. One can even murder people to become powerful, to become rich. सो ग्रीड लालच जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है बिकॉज लालच अगर हमारे दिमाग में होती है तो वो हमें मोटिवेट करती है कि हम गलत काम करें, गलत एक्टिविटी करें, अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करें। तो ये हमारी भी लाइफ डिस्ट्रॉय करती है और दूसरों की भी। तो इवन लोग इसमें एक दूसरे को मार भी देते हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, रिच बनाने के लिए। तो इसीलिए वी शुड नेवर बी ग्रेडी। इन अ फार ऑफ विलेज देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ। एक विलेज में दूर एक पुअर फार्मर और उसकी वाइफ रहते थे। दे ओन्ड अ गूस। उन्होंने गूस को ओन किया। द गूस वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज इट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। अब वो स्पेशल क्यों था? क्योंकि वो डेली एक गोल्डन एग को देता था। द फार्मर यूज टू सेल एग एवरी डे, सो द फार्मर एंड हिज वाइफ बिकेम वेरी रिच। अब फार्मर क्या करता था? उस एग को रोज जब वो एग देती थी तो उस एग को ले जाता था, बाहर भेजता था और इस धीरे धीरे करके वो दोनों पैसे उनके पास आ गए और वो बहुत अमीर हो गए। बट सून दे बिगेन टू थिंक दे वर नॉट गेटिंग रिच फास्ट इनफ। लेकिन अब वो सोचने लगे कि हम जल्दी जल्दी अमीर क्यों नहीं हो रहे। इफ वी कुड गेट ऑल द गोल्डन एग्स टुगेदर वी वुड बिकम रिच इन नो टाइम, सेड द फार्मर्स वाइफ। तो फार्मर की वाइफ ने बोला कि अगर हम ये सारे एग्स को एक साथ बेच देंगे, इतने सारे एग्स हमें मिलते हैं, हम इकट्ठे सारे एग्स को दे देंगे तो हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। यू आर राइट, रिप्लाइड द फुलिश हस्बैंड। अब हस्बैंड भी फुलिश था, उसने कहा हाँ ये तो तुम सही कह रही हो। वी डोंट नीड टू वेट फॉर द गूस टू ले हर एग एवरी डे। तो हमें उस गूस का रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि वो रोज एग ले करे और तब हम उसको मार्केट में सेल करें। वी कैन हैव देम वंस फॉर ऑल। एक ही बारी में सारे बेच सकते हैं। बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू किल द गूस एंड कलेक्ट ऑल द गोल्डन एग्स, सो दे किल्ड द गूस एंड स्लॉटर्ड इट। अब दोनों ने सोचा कि हम इस गूस को मार देते हैं और जितने भी एग्स हैं सारे एक बारी में निकाल लेंगे और सारे हम जाकर मार्केट में बेच देंगे। तो दोनों ने उस गूस को मार दिया। बट दे फाउंड दैट शी वॉज जस्ट लाइक एनी अदर गूस। तो उन्होंने देखा कि वो तो किसी दूसरे गूस की तरह ही है। शी डिड नॉट हैव एनी गोल्डन एग्स इन हर एट ऑल। उसके अंदर कोई भी गोल्डन एग्स नहीं थे। Thus, the greedy farmer and his wife lost both the goose and the golden eggs. अब जब उसको मार दिया तो वो भी मर गया और golden eggs भी नहीं मिलेंगे अब। So due to their greed and haste, they lost their wealth and became poor once again. तो अपनी लालच की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से उन्होंने अपने आप को फिर से वापस वहीं पहुंचा दिया और वेल्थ भी उनके हाथ से चली गई और वापस से वो पुअर हो बन गए। Moral: we should be satisfied with what we have. Wishing you for many may cause great loss. तो हमें satisfied होना चाहिए जो भी चीज हमारे पास है। We should be satisfied with that and ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। Now let's do the exercise. Pick the correct option. The farmer had a goose. The goose laid a dash every day golden egg. The farmer dashed the goose. The farmer killed the goose. The greedy farmer and his wife lost both the goose and the golden eggs. Now let us do fill in the blanks with the words given below. The dash was very special. The goose. The goose laid a dash egg every day. The goose laid a golden egg. Both of them decided to dash the goose. Kill. They dashed the goose and slaughtered it. Killed. And they became dash once again poor. Now let's do the match the following. Greedy. Greedy is, that is, farmer and his wife. Goose is a special bird. Farmer used to sell egg every day. Due to greed, they lost their wealth. And the farmer and his wife became poor once again. Now let's do the complete the words. Now the first is, the word is farmer. Then the second word is special. This is goose. This is foolish. This is golden. And this is haste.
So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again, and we'll meet in the next video with the next chapter. Bye bye. Take care. Thank you.